students, Assalamu alaikum. How are you all today? As you know that we have completed almost 3 chapters, 3 lessons from book 2, and the exercise of 3rd lesson, why boys fail in college, is yet to be done. तो उसको हम करते हैं, जो रिमेनिंग चीज़ें आपकी रह गई हैं बेटे उसको आज करते हैं. एक्चुअली योर एक्सरसाइज कंप्राइजेज सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. ये मैं आपसे बारहा बात कर चुकी हूँ बेटे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में एफएससी पार्ट 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे. देखिए, एक तो उसमें सिनोनिम का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आंसर्स, और जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपने पंक्चुएशन भी की, ट्रांसलेशन भी की, इस तरह के क्वेश्चन पार्ट 2 में शामिल नहीं है. तो हमने सिनोनिम्स जो हैं उसके 5 सेंटेंसेस किए थे यूनिक नोट्स में से. बेटे थोड़ा सा एक आपको इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि लेसन जो हमने पढ़ा, ताकि आप थोड़े वो बच्चे जिन्होंने ये लेक्चर लास्ट वाला नहीं लिया वो थोड़ा सा समझ सके कि लेसन जो है उसमें क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की गई थी. बेटे देखिए, आपका 3rd वाला लेसन है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. तो मैंने आपको ये बताया था कि द राइटर बेसिकली हैज़ इन्यूमरेटेड the causes of the failure of boys particularly in a college. He did not discuss about the girls separately. तो कौन कौन सी causes हो सकती हैं बच्चों के कॉलेज में फेल होने के, बॉयज़ के फेल होने के क्या असबाब हो सकते हैं. We see, he says the restlessness and nervous habits. And before this, another thing I would like to discuss here, that he says there are 2 types of students who fail in examination. One who do not try at all, definitely they fail, and the students who really make an effort, but that is not a serious one. They remain inattentive to their work, ultimately, or as a result they fail. Then we see another reason for the failure of the student, and that is restlessness and nervous habits. I have already discussed that some students are in habit of being nervous and restless during their studies time. So in this way they ignore or they waste most of their time and they divert all their attentions towards other activities and resultantly they fail. बहुत से बच्चे इस तरह की कैफियत में रहते हैं, पढ़ने के दौरान नर्वस रहते हैं और अपनी किताबों पे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देने के बरक्स वो इर्द गिर्द की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से वो सही तौर पर लेक्चर को पिक नहीं कर पाते और क्या होता है जनाब, फेल हो जाते हैं. सही तैयारी ना होने की सबब फेल हो जाते हैं. अनदर रीज़न इज़ मिस्टेकन एम्बिशन मैप्ड आउट बाय पेरेंट्स. वी सी that the mistaken ambition on the part of parents for their son is another reason for the failure of students. Sometimes the parents, they want their son to be a doctor, to be an engineer or dentist, whereas the son might be having interest in some other fields, like he would like to become a theatrical manager or book illustrator or like that, or a businessman you can say. तो इस तरह से होता है कि बाज़ दफ़ा वो तमाम मज़ानीन, वो करियर जिनका इंतखाब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं, बच्चे उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाते और लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर एक नॉन सीरियस बिहेवियर की तरफ ले जाती है उन्हें, और इस तरह से वो कोई इंटरेस्ट उन मुतल्लिका सब्जेक्ट्स में ना होने के सबब फेल हो जाते हैं. जी, द 3rd वन इज़ पुअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. Well, we talked about that all as well, that sometimes the poor mental and physical health hinders the proper application or proper attention to the assigned tasks. So that is why for such cases it is recommended by the author that the students must undergo thorough physical examination. It's really necessary to diagnose what is the matter in fact with those students. तो अगर बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम पे, और ये वजह भी उनके फेलियर के लिए हो सकती है. Overconfidence, number 4. Overconfidence, little effort and lack of seriousness. We see that some bright students, some talented students, they are of the opinion that with little effort they would be able to go through the examination as they did during their school studies. But it is not like that.
Actually, in higher grades, in higher classes, we need to pay more and more attention towards studies. It demands our too much attention towards tasks assigned. Only then the student would be able to go through the examination. यानी बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि जिस तरह से स्कूल में कम एफर्ट करके थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को दे के वो पास हो गए बेहतर ग्रेड्स में, तो कॉलेज में भी शायद ऐसा मुमकिन होगा। जबकि कॉलेज में जो पढ़ने के कुछ और तकाज़े हैं, चूँकि चीज़ें एलाबोरेटेड हैं, डिटेल्ड हैं, उन्हें पढ़ना है, स्टडी करना है, तैयार करना है, तभी पास हो सकेंगे। तो लिहाजा ये जो ब्राइट स्टूडेंट इस खाम ख्याली में रहते हैं कि जी हम थोड़ी एफर्ट के साथ चीज़ों को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे, तो बेटे इसमें भी एफर्ट जो लैक ऑफ सीरियसनेस जो है वो एक रीज़न हो जाती है फेलियर की। देन फाइनेंशियल प्रेशर, यानी समटाइम्स द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी फॉर देयर लाइवलीहुड, टू शेयर द बर्डन ऑफ देयर फैमिलीज एंड ऑल्सो टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। तो बच्चों को अगर मजबूर किया जाए कि वो पढ़ने के दौरान जो है वो जॉब भी करें, अर्निंग भी करें, अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मीट करने के लिए और अपनी फैमिली बर्डन को शेयर करने के लिए, तो बच्चा जो है उसके एजुकेशन पे बुरे असरात हो सकते हैं और वो फेल भी हो सकता है। देन टू मच इन्वॉल्वमेंट इन गेम्स एंड साइड शोज, तो सम चिल्ड्रंस वुड सी दैट दे टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, दे टेक टू मच इंटरेस्ट इन गेम्स, sports and other activities which are the part of college life। तो राइटर कहता है ये इनमें पार्टिसिपेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है वी हैव टू कीप बैलेंस इन स्टडीज़ एंड इन आवर पार्टिसिपेशन इन साइड शोज और गेम्स एट्सेट्रा। अदरवाइज़ क्या है कि फेलियर होने के चांस होते हैं। फिर नंबर 7, लेजी ब्लफर्स एंड डिसीवर्स। हम क्या देखते हैं कि लेजी ब्लफर्स कौन है? हु एंटर इन एन एल्मा मैटर एमलेसली, दे डू नॉट हैव एनी पर्पस रिगार्डिंग देयर फ्यूचर और करियर। उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई सीरियस उनके जहन में कोई संजीदगी नहीं पाई जाती है, अपने करियर के हवाले से वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन्हें लेजी ब्लफर्स का नाम दिया गया है। एमलेसली कॉलेज में आते हैं, घूमते फिरते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। फिर ये रीजंस बयान करने के बाद हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमसे डिस्कस की गई है, और वो क्या है कि द डीन और द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी हैविंग डायग्नोस्टिक एबिलिटी, एंड डायग्नोस्टिक एबिलिटी लाइक दैट ऑफ अ फिजिशियन, कि जिस तरह एक अच्छा फिजिशियन होता है उसमें डायग्नोस्टिक एबिलिटी बहुत आला हमें नज़र आती है। वो चीज़ों वो बीमारी को डायग्नोज करता है, उसके सिम्टम्स रीड आउट करता है और स्टडी करता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको क्योर, उसका क्योर उस बीमारी का, उस एलिमेंट के लिए क्योर जो है वो फराहम करता है। तो इसी तरह से ये डायग्नोस्टिक एबिलिटी जो है फिर उसमें डीन में भी होना चाहिए, सो दैट ही वुड बी इन अ पोजिशन टू लोकेट, टू फाइंड आउट द डिफरेंट reasons or the problems which are faced by the students who fail or who remain unable to go through their examination। ठीक है बेटे, ये सारा डिस्कशन हुआ, ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका रिव्यू दिया। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के हवाले से। बेटे सिनोनिम्स हम लोग कर रहे थे, तो सिनोनिम्स आपने 5 सेंटेंसेस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, और अब नंबर 6 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नंबर 6 हम बेटे जितने भी एक चैप्टर से, एक लेसन से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, बोर्ड पर लिख देती हूँ ताकि आप भी उसको नोट डाउन कर लें, उसको समझ लें। और इसके अलावा यही सिनोनिम्स जो है ये आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं ताकि ये एक दफ़्तर फिर रिवाइज हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। हमने पढ़ा टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर मीन टू डील फॉर्मली, यानी मजबूती से अपना मुहासबा करना। द बॉयज मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड द अंडरलाइंड वर्ड्स आर टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, एंड ऑप्शंस गिवन हियर आर डील फॉर्मली, एलोकेट, शार्पन, ऑब्जर्व। तो अपना मुहासबा करना चूँकि इस वर्ड का मीनिंग है, तो एलोकेट डजंट मीन दैट, शार्पन भी इसका मीनिंग नहीं है, ऑब्जर्व भी इसका मीनिंग नहीं है। डील फॉर्मली का मतलब खुद से निपटना, मुहासबा करना है, तो लिहाजा इसका राइट आंसर इज डील फॉर्मली। नंबर 7, द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज, एंड पॉइज इज
the underlined word, and calm that smooths the fidgets. तो हमने ये पढ़ा कि बच्चे को अपने अंदर डेवलप करना है एक पॉइज. पॉइज क्या होगा? पॉइज मीन्स कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, एक सुकून की कैफियत को हम कहते हैं पॉइज. तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं करियर. करियर पॉइज का मीनिंग नहीं हो सकता. इसी तरह से एम्बिशन, एम्बिशन भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइज तो एक पुरसकून कैफियत को कहा जाता है. कंपोजर, यस, कंपोजर मीन अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी और स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बीइंग रिलैक्स्ड. और प्रेजेंस, प्रेजेंस भी इसका मीनिंग नहीं हो सकता बेटे. तो राइट आंसर इज कंपोजर. नंबर 8, the boy should cultivate a poise and calm that smooths the fidgets. Smooths, and your word is, the underlined word is smooths. Smooths का मतलब क्या होता है? Smooths mean to suppress, to control, किसी कैफियत को दबा लेना, कंट्रोल कर लेना, काबू में ले आना. तो हम देखते हैं कम्युनिकेट. कम्युनिकेट का मतलब कन्वर्स विद वन अनदर, एक दूसरे से बातचीत करना. तो ये तो स्मूदर का मीनिंग नहीं हो सकता. इसी तरह से रिफ्यूजेस, इनकार करना. फिर हम देखते हैं मेंटेन्स, फिर सप्रेसिस. सप्रेस मीन टू कंट्रोल. तो एग्जैक्ट मीनिंग स्मूदर का क्या हुआ? सप्रेस, सप्रेसिस. स्मूदर्स, सप्रेसिस. नंबर 9, a common cause of failure is a mistaken ambition on the part of parents, and the underlined word is mistaken. Mistaken क्या होता है? wrong, गलत, गलत तरीकों को कहा जाएगा. तो ऑप्शन ए wrong, बी desirous, सी urgent, डी growing. ये तीनों ऑप्शंस जो हैं mistaken के साथ desirous भी नहीं हो सकता, aspiring, और growing भी नहीं हो सकता, urgent भी नहीं हो सकता. तो आंसर इज wrong. Mistaken mean wrong. The boy is not trying to do it with any distinction. Distinction क्या होता है? Some valuable quality, some excellence, कोई बेहतर तरीके से काम करने की सलाहियत. The boy is not trying to do it with any distinction. It means the options are conclusion, excellence, direction, and counter. Counter mean to face. तो here distinction mean excellence. Excellence, valuable quality. Next statement, he is following a direction mapped out by his parents. Mapped out mean planned out. मंसूबाबंदी किया जाना. तो options are planned, helped, eradicated, stepped. The right answer is planned. Number 12, it may be unreasonable for the boy, and your word is, underlined word is unreasonable, and options are sensible, social, illogical, and nervous. Unreasonable क्या होता है? गैर माकूल. गैर माकूल के लिए आप सेंसिबल तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, सोशल भी यूज़ नहीं कर सकते, नर्वस भी नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर इज इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट. जी. नंबर 13, he ought to like onions when he detest them. Detest का मतलब क्या है? आपने पढ़ा, to hate, नफरत करना, टू लोथ, नफरत का, हिकारत का इजहार करना. एंड वर्ड्स आर अप्रूव्स, लाइक्स, हेट्स, फेवर्स. एंड द आंसर इज हेट्स. नंबर 14, द बॉय विंस आउट इन सच कॉन्ट्रोवर्सीज. कॉन्ट्रोवर्सीज मीन आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ऑप्शंस आर एप्लीकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइकिंग, कॉपरेशन. कॉन्ट्रोवर्सीज क्या होगा? मैंने बताया भी आपको, ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स. तो यहाँ मीनिंग क्या होगा इन ऑप्शंस में? कॉन्फ्लिक्ट्स. नंबर 15, he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him. Right? Distasteful का मतलब which is unpleasant, unpleasant, which one does not approve, जो चीज़ पसंद ना हो. तो here options are unpleasant, pitiable, reasonable, necessary. तो accurate answer of distasteful is unpleasant. Number 16, such boy is the most pitiable object among all the failing students. Pitiable क्या होता है? काबिले रहम, the one for whom we feel pity for. ठीक है जी, जिसके लिए हम रहम के जज्बात रखें. तो ऑप्शंस हैं आइडियल, ग्लोरियस, शाइनिंग.
आइडियल, ग्लोरियस, शाइनिंग, ये तीनों वर्ड्स जो हैं इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहे कि जिसमें किसी पर तरस खाने का, रहम खाने का इजहार हो रहा हो. अनदर वर्ड इज पथेटिक. पथेटिक मीन पिटिएबल, काबिल रहम. तो दैट इज द राइट आंसर. नंबर 17. इट इज़ ट्रेजेडी टू सी ऑल ऑफ हिज कीननेस गोइंग टू वेस्ट. कीननेस क्या होता है? कीननेस बेसिकली इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, कैपेबिलिटीज. तो ऑप्शंस आर जॉय, हैप्पीनेस, डिज़ायर एंड इंटेलिजेंस. तो कीनेस का मतलब इंटेलिजेंस हियर, तमाम तर जहानत को कहा जाएगा. द एंटायर अपॉर्चुनिटी इज पास्ड अप बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड. एंड ये किसके बारे में कहा गया है? द ब्राइट स्टूडेंट हु possesses a receptive mind but all his energies, all his power gets wasted or spoiled due to being overconfident and due to having little effort regarding his assignments. तो receptive क्या होता है? Very quick, responding, sharp mind. So we are having options like quick, dull, recept, consent. So automatically the answer of receptive is quick. Number 19. An adequate health service is available. An adequate health service is available in the college. Underlined word is adequate. Adequate mean proper, suitable. Options are slow, sharp, local and proper. The answer is proper. Your answer is proper. Well beta, the very next option is an immense number of failures can be avoided. Immense mean, immense बहुत common word है. Immense mean large, enormous, huge, बहुत बड़ा. तो options are large, short, small, proper. So your answer is large. Number 21. In the case of poor academic work for which the reason is not apparent. Apparent mean obvious, very clear, वाज़े होना. तो options are hidden, surprising, clear, thorough. तो apparent की option में हम देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है हमें? Clear. B option, clear is the correct answer. 22. Various reasons have been brought to the light for the enlightenment of the faculty. Faculty, teaching staff. Enlightenment here means awareness, insight, फहम, परसेप्शन. तो ऑप्शंस एनलाइटमेंट आपका अंडरलाइंड वर्ड है. इसके साथ ऑप्शंस आ जाती हैं अवेयरनेस, लाइटन, डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मीन इमीडिएट, फौरी. जी बेटे, तो आपके पास क्लियर कट एनलाइटमेंट का मीनिंग है अवेयरनेस, इंसाइट. नेक्स्ट सेंटेंस, ओकेजनली वन मीट्स एन ओल्ड fashioned father. Underlined word is occasionally. Occasionally means sometimes, kabhi kabar. And options are frequently, impulsively, sometimes, automatically. The answer is sometimes. Next statement. He would not consent to the operation. Consent mean क्या होता है? Consent mean to give approval, to give permission, to assent. किसी चीज़ को मान लेना, इजाज़त दे देना. तो options are disagree, assent, vigor and doubt. So the correct answer to consent is assent, A-S-S-E-N-T. The next statement is there is no substitute for health. Your underlined word is substitute. Substitute means replacement, alternative, किसी चीज़ का मुतबादिल. And options are price, alter, alternative and alter. जी, the right answer is alternative. Number 26. He possesses the physical vigor. Vigor means strength, power, ताकत को कहा जाएगा, मजबूती को कहा जाएगा. तो options are weakness, strength, process and trust. तो the correct answer to vigor is strength. Number 27. He possesses the vigor to bring it to bear on the world's problem. Bring it to bear. Bring it to bear basically means to apply, to counter, to face. इस्तेमाल में लाना, सामना करना. To apply to. जी बेटा. Options are shrink from, point out, apply to and endure. And the correct answer is apply to. Number 28.
It is always to the detriment of their health. Detriment mean loss, damage, नुकसान को कहा जाता है. तो options are damage, use, benefit, chance. The right answer is damage. Boys undergo transfusion of blood. Transfusion क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना. तो options are change, transfer, donor and site. The correct answer is transfer. Number 30. It is a heart-rending spectacle. Heart-rending means very painful, and it means but our underlined word is spectacle. Spectacle means sight, scene, मंजर को कहा जाएगा, मंजिर. Scene, options are scene, felicity. Felicity means happiness, and the next word is vain and sickness. So the correct answer to this word is scene. Number 31. Inevitably, it is an important reason for failure. Inevitably means certainly, definitely, यकीनी तौर पर. तो options are doubtfully, certainly, indefinitely, sorrowfully. तो यहाँ इन चारों के मीनिंग्स को लिया जाए तो इनएविटेबली का मतलब क्या होता है? यकीनी तौर पर, सर्टेनली. तो अगर हम डाउटफुली कहते हैं तो डाउटफुली तो बिल्कुल ऑपोजिट सस्पिशन की तरफ चला जाएगा, मुख्तलिफ वर्ड हो जाएगा. इनडेफिनेटली जो है वो एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा. सोरोफुली जो है वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड को, ग्लूम को इंडिकेट करता है, जो कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इनएविटेबल का. तो इनएविटेबली मीन्स सर्टेनली, यकीनन, essentially. Next sentence is most college try to alleviate this situation. Alleviate mean to lessen, to decrease, to minimize. किसी situation को कम से कम, तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश करना. तो यहाँ पर जनाब है options. Your word is alleviate and the options are increase, intense, LESSEN lessen यानी टू रिड्यूस, और LESSON लेसन सबक को कहा जाएगा. तो आपकी ऑप्शन क्या है करेक्ट? LESSEN मीन टू मिनिमाइज, रिड्यूस. नंबर 33. देयर जजमेंट इज परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स. परवर्टेड मीन क्या होता है? परवर्टेड मीन मिसलेड. मिसलेड गुमराह हो जाना, ठीक है, स्टम्बल्ड. तो हम देखते हैं यहाँ पर परवर्टेड के साथ क्या ऑप्शंस हैं? मिसलेड, calmed, demanded and led. तो करेक्ट आंसर इज मिसलेड, गुमराह हो जाना. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू द कॉलेज. ड्रिफ्ट इनटू इज द वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड. ड्रिफ्ट इनटू मीन्स sorry, we didn't do the statement number 34. A few lazy bluffers drift into college. Bluffers is the underlined word here, and bluffers mean the deceivers, one who deceives others. So the options are boasters, deceivers, shriekers, cricketers. तो क्या होगी इसके आंसर क्या होगा? deceivers. A few lazy bluffers drift into college. वही स्टेटमेंट दोबारा हमारे पास आती है और इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है? drift into. Drift into means to enter or to go somewhere aimlessly without any purpose at all. बिला मकसद कहीं जाना. तो ऑप्शंस हैं go aimlessly, go purposefully, go reasonably and go wisely. So your answer is go aimlessly. Next statement is he is helping the youth, he is helping the young man to see life steadily. Steadily mean constantly and gradually, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनकन्सिस्टेंट. इनकन्सिस्टेंट जो है वो तो स्टेडली को बिल्कुल मीट नहीं कर सकता, compete नहीं कर सकता. वर्ड इनकन्सिस्टेंट मतलब द पर्सन हु इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअली, देन यूजुअली एंड inactively. So the right answer is gradually. That means gradually and constantly. The last sentence is the college dean should have the diagnostic ability. Diagnostic mean examining, यानी मुआयना करने की, तशखीस करने की सलाहियत होना. The options are examining, ailing, deceased and engrossing. Engrossing means, what is meant by engrossing? Engrossing means absorbed in something. And what is meant by ailing? Ailing mean ill, deceased, बीमार. तो यहाँ ऑप्शन क्या होगी जनाब? आंसर क्या होगा डायग्नोस्टिक का?
A option, and that is examining. That was all about synonyms, BT. Now coming towards our questions, we will see here that we are having almost 7 questions at the end of the lesson. First of all, we will give their answer, and we are also having some additional questions which you will find in your unique notes. तो हम लोग पहले ये टेक्स्ट के एंड पर दिए गए आपके लेसन के एंड पे मौजूद जितने क्वेश्चंस हैं 7 के करीब ये क्वेश्चंस हैं, हम लोग पहले उनको सॉल्व करते हैं और इसके बाद जितने भी एडिशनल क्वेश्चन मज़ीद क्वेश्चन जो इस लेसन के हवाले से बन सकते हैं और बोर्ड के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी. तो बेटी क्वेश्चन नंबर 1 इज़, according to the author there are some boys who fail because they do not try. Who they are? Can we help them? तो बेटा पूछा गया है कि who according to the author there are some boys who fail because they do not try. So definitely the students who are having lack of motivation, the students who are having lack of seriousness, so definitely or resultantly they fail because they do not focus on their work, they do not concentrate on their studies. So ultimately the result is going to be 0. And the question, the remaining part of this question is, who are they? Can we help them? Can we help them? Yes, we can bring them home the importance of seriousness in life. We can make them realize that what is the importance of studies in their life and how is it important to follow or to go for some career making, or to go for some planning for your future and for your career. If you want to stand somewhere in the society, so you will have to work really very hard in your life. तो ये इन बच्चों को हमें we have to give a sort of motivation and inspiration to these students who do not try at all. We have to bring them back to the work so that they could be in a position to realize the importance of studies in their life. जी बेटे, the next question is, how does mistaken ambition on the part of the parents lead to the failure? How does a mistaken ambition on the part of the parents lead towards the failure of students? We see that sometimes the ambition or the career planning is done by the parents on the part of their son. So sometimes again we do not find, we see that the students do not have a sort of interest in the subjects or in the fields which are mapped out or which are selected by their parents. So that is why they do not pay proper attention towards their work, or they do not take interest in those subjects which are selected by their parents, and ultimately these wrong decisions on the part of the parents lead towards the failure of their children. ठीक है जनाब, तो parents should not impose their own will on their children. Rather, students should be given this, or the children should be given this option to make selection of the subjects of their choice. नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटे ये देखें, ये आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स लीड टू फेलियर, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके नोट्स में बहुत वाज़ेह तौर पर वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आ गए हैं, मुख्तलिफ सालों में आए हुए हैं बेटे, उनको पिन पॉइंट किया गया है और वो लिख दिया गया है ताकि आपकी नॉलेज में भी रहे कि ये क्वेश्चन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बेटे, नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क in a college. There are some boys whom we find doing very well, who have done well during their school studies, but they do not do satisfactory work when they go to college. So who are they? Who are they? Do we have such boys in our institution or colleges? ठीक है बेटे, तो 2-3 तरह के इसमें आज से सवाल किए गए हैं. नंबर 1 कि वो बच्चे जो कि स्कूल में तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर देते हैं लेकिन कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो बेटे क्या हमारे कॉलेजेस में ऐसे बच्चों की कोई मिसाल मिलती है? वही सी, और कहा गया हु आर दे, ये कौन बच्चे होते हैं? आपने अपने लेसन में ये पढ़ा था कि वी फाइंड अ कैटेगरी और टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल और हु रिमेन अनएबल to go through their college examinations, and the one type is
of the bright boy, and the bright boy is the boy who is really sharp minded, who is very intelligent, who is very witty and who possesses great intellect. लेकिन क्या है, he doesn't pay attention towards his studies. He is just having opinion like that he would be able to go through the college examination, the college exams through little effort as he did in school. लेकिन क्या है कि actually a great effort is required at higher level to do something marvelous or outstanding or to reach to your targets and goals of life. So do we find any such cases in our colleges? The answer is yes. There are a number of such cases. There are a number of such students in most of our colleges who remain overconfident and who just do little effort to go through the college examinations and mostly they fail. ठीक है, तो कहा गया जो ब्राइट स्टूडेंट है, एंड दैट इज द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स. वी सी that sometimes parents force their children to earn money not only to share the burden of their families but also to meet their college expenses. So in this way they get mighty poor education and mighty poor living. So parents should share their burden. Now financial career definitely leads toward the failure of the students. Next question देखें, to what extent does the question of health lead to failure at college? How far the college authorities with their medical offers help students in such cases? We see that the poor physical and mental health definitely hinders the proper attention and application to the work, and due to having poor mental and physical health, sometimes students fail. Or what are the remedies for such students? Such students are recommended to undergo complete physical examination so that the cure could be traced out of the ailments they might be having. ठीक है, जो इनका जो है डायग्नोसिस होना चाहिए, उनका एलिमेंट का, उनकी बीमारी का इलाज जो है सामने आना चाहिए ताकि वो सही तौर पर अटेंटिव रहकर अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकें. What place would you accord to sportsmen in college? We see that sometimes some students take too much interest in sports and they totally negate or neglect or ignore their studies. So the writer is of the opinion that such students should leave education and become a professional player. कि वो बच्चे जो कि प्लेस में और गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और बिल्कुल पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, ना पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को चाहिए फिर वो तालीम से खैर बात कहे, तालीम को खैर बात कह दें और क्या करें जनाब, और प्रोफेशनल प्लेयर्स बनने के लिए ही सीरियस एफर्ट शुरू कर दें. There are another question. There are some students who join college for the fun of it. Should they be allowed to stay? तो वो कौन है? The students who join the college just for the sake of having fun, just for the sake of having some recreation. They are the lazy bluffers. They are the deceivers. तो उनके लिए remedy क्या होना चाहिए? The writer is of the opinion that we should leave them to the cold torrents, the cold torrent of the world. ठीक है, the very cold and unsympathetic attitude of the people will teach them a lesson. क्यों नहीं दुनिया के धारे पे छोड़ दें. दुनिया का जो रफ एटीट्यूड है, अनसिंपैथेटिक अनकाइंड एटीट्यूड है, उससे वो लेसन सीखेंगे. They will definitely try again to turn back to the fine work, the quality work, the quality education. तो ऐसे बच्चे दुनिया की जो सर्द मोहरी है, दुनिया की जो अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड है, उसकी वजह से ये सही काम की तरफ लौट आएंगे. बेटे एडिशनल क्वेश्चन जो है थोड़े से इसको गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से, ये सब इसी लेसन से रिलेटेड हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉयज़ हु फेल इन द कॉलेज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉयज़, वन हु ट्राई एंड द वन there are two types of students who fail, one who try and the other who do not try at all. ठीक है जी, ये हमें बताया है इस लेसन में, इस ऑथर ने ये अपनी ओपिनियन पेश किया. नंबर 9, हाउ कैन नर्वस हैबिट्स बी इरेडिकेटेड अमंग बॉयज़? बॉयज़ में नर्वस हैबिट्स को इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है? We see that some students they remain restless or nervous during their studies, during their study time. So the remedy is that other people can only see this difficulty. The boy will himself
will have to cultivate a sort of poise and composure to suppress his restlessness. उस बच्चे को अपनी restlessness को अपनी nervousness को control करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खुद इस nervousness को suppress करने के लिए एक composure की कैफियत या एक पुरसकून कैफियत में अपने आप को लाना पड़ेगा, अपने nervousness से छुटकारा पाना पड़ेगा. Why does a boy who follow a wrong path fail? Why does a boy who follow a wrong path fail? जो wrong path follow कर रहा है वो fail क्यों हो जाता है? Because he doesn't take interest in the subjects which are selected by his parents. So definitely he remains non-serious all the time regarding his studies and fail. Number 11. Question number 11. What is the most pitiable case among the boys who fail? We see, beta, the most pitiable scene is the bright boy indeed. The bright boy who wastes all his time, who remains non-serious again, and who is having the idea that he would be able to go through the examination with little effort as he did in school. So that is he lives in a world of dreams indeed. He has to work really very hard. He has to work very hard to go through the examination or to get outstanding grades. Number 12. How can failure be avoided among bright boys? Beta, it is again not easy to eradicate this problem. The boy, other can see the difficulty. The boy has to has to bring a positive change in his attitude and behavior. Similarly, he will have to cultivate a new set of habits. उसे अपनी आदत को खुद ही rectify करना है, अपने आप को change करना है, अपने behavior को change करना है. Number 14. Why does Hawkes ask the boys to undergo a thorough physical examination? So the writer says that whenever he found any boy not showing any interest in his studies, not taking part actively in class work, he always asked or recommended him to go or to undergo a thorough medical examination to trace out the real problem faced by that boy. Number 15. From what different diseases boys suffer from in college? We see the boys suffer from different diseases in college. These diseases, according to the writer, include tuberculosis, bad tonsils, stomach disorder and sleeping sickness. Number 16. What do parents owe to their son towards their studies? Parents जो है वो क्या उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से? हम देखते हैं कि parents are responsible to provide complete financial aid or assistance to their children so that they could be able to continue their educations. They are responsible, actually parents are responsible for their being here in this world. So that is why ultimately it is their responsibility to equip them with the tools to face or to tackle the problems of the world, and the tools are all related to education. What is heart-rending spectacle? Heart-rending mean painful, spectacle sight. तो सबसे ज़्यादा heart-rending बहुत it is again very important question of the chapter कि heart-rending scene क्या है जनाब इस chapter का बहुत दिल दहला देने वाला जो एक वाक़या according to writer वो क्या है? वो कहता है कि to see the students working right from the evening, continuing their job till late at night, and to see them undergoing blood transfusion for the sake of money to meet their school expenses or to share the burden of their families. It is the most heart-rending spectacle according to the author. Number 18. How can college authorities solve the problem of financial difficulty? तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है उसको रिमूव करने के लिए कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज कैन एलिविएट minimize the problems of the students through stipends and through scholarships. स्कॉलरशिप दी जा सकती हैं, स्टाइपेंड्स दिए जा सकते हैं, इस तरह से फाइनेंशियल एड उनको प्रोवाइड की जा सकती है ताकि सो दैट दे कुड बी इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन. नंबर 19. हाउ डू स्पोर्ट्स बिकम अ कॉज ऑफ फेलियर अमंग बॉयज़? अकॉर्डिंग टू हॉक्स, हॉक क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड साइड शोज इज़ नॉट बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, कि ये बच्चों के फेल होने की कोई नुमाया वजह नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्या कहता है द स्टूडेंट्स नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन देयर स्टडीज़ एंड देयर इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ और गेम्स. Right, Pete? Number 20. What should be the role of a college dean? It's written over here that the dean must be having
a diagnostic ability like that of a physician, and if he possesses this quality, only then he would be able to save his students from foolishness, from faulty actions and from carelessness. Ji beta, last question is, in which two classes does the writer divide the unsuccessful boys? The writer actually says that there are two classes of unsuccessful students, those who try, those who do not try at all. ठीक है बेटा, तो here comes the end of this today's lesson, and in today's lecture we did exercise, the complete exercise including synonyms and question answers, and I also gave a sort of review of the lesson right in the start of this lecture. इस lecture के start में एक review लिया हम लोगों ने इस lesson का, इसके बाद इसकी exercise को complete कर लिया है बेटे। इंशाल्लाह next lecture में और मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। तो बेटे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, stay at home, stay safe, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।